All right, now big war over Kejriwal's CAA rape analogy. Kejriwal says CAA will lead to a flood of crimes in India, including rape and riot. BJP slamming him, asking are Afghan Sikhs rapists? Sikh refugees saying don't brand Sikh refugees as rapists. Can die for women's safety. We are all for women's safety. Sikh refugees there responding to Arvind Kejriwal, as he says, this will lead to crime, a spurt of crime that will be reported in India across the country. If people from outside the country are allowed inside, then it will, one, take away our resources that exist for the people of this country. Moreover, will lead to huge riots and rape-like situation. BJP has responded. Have a listen. अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके, और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। ये बुरा काम करते हैं, चोरी करते हैं। हम अफगानिस्तान में जो हमारे दीन से गैर मुस्लिम भरा थे, उनकी बहनों को हम अपनी बहन समझते, उनकी माँ को अपनी माँ समझते, उन भरा को अपना भरा समझते। वहाँ पे हम बलात्कार नहीं करते, वहाँ पे हम चोरी नहीं करते, वहाँ पे हम बदमाशी नहीं करते। अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में बदमाशी करते हैं। ये जिसने बोला है उसने गलत बोला है, वो आप हिंदुस्तान का नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। वो यही कह रहे हैं कि सीए कानून के बाद 1947 से बड़ा माइग्रेशन होगा, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होंगे, साथ ही साथ बलात्कार बढ़ेंगे, दंगे ज्यादा होंगे, और कई जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? माफ करना, कहना नहीं चाहता, गंदे लोग गंदे ही रहते हैं। नाली में से तुम किसी को निकालकर बाहर खड़ा कर दो, वो बदल नहीं सकता। ऐसी गंदी मानसिकता अब हम सिख बलात्कार करेंगे, हमारे जो हिंदू मानसिक हैं वो बलात्कार करेंगे। ये गंदी राजनीति तुम कर रहे हो अरविंद केजरीवाल जी। पहले तुम कह रहे थे हम सिखों को, हिंदुओं को वहां की नागरिकता नहीं लेने देंगे, अब तुम कह रहे हो कि अगर ये सिख और हिंदू आ जाएंगे तो बलात्कार करेंगे यहाँ पे आके। क्या घटिया सोच है अरविंद केजरीवाल तुम्हारी। रोंगैये जिनको आप ला रहे हो, जिनको आप घर और मकान और प्लाट देना चाहते हो, वो आरती करेंगे और हम बलात्कार करेंगे। पाकिस्तान में हिंदू बेटी, कांग्रेस ये मानती है कि इस बार हम मुसलमान की वोट लेने में कामयाब होंगे, क्योंकि हमने राम मंदिर का विरोध किया है। और अब अरविंद केजरीवाल ये मानता है कि मुझे कांग्रेस से वो मुस्लिम वोट छीननी है। ये आपसी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मुस्लिम वोट को लेकर जो लड़ाई, क्योंकि हमारी वोट बहुत कम है, हमारे तो दिल्ली में नाम मात्र वोट है, ये वोटों की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। हमें दुख है कि हमें अब बलात्कारी भी कहा जा रहा है, हमें लुटेरे भी कहा जा रहा है, हमें डकैत भी कहा जा रहा है। हमें इस बात का खेद है भाई अरविंद केजरीवाल जी, ना हम बलात्कारी हैं, ना हम लुटेरे हैं। हम वही हैं अरविंद केजरीवाल जी जो कोविड में आप हमारे को हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे लंगर भेजो। हम वही हैं अरविंद केजरीवाल जी जिनको हाथ जोड़कर कहते थे रकाबगंज के अंदर हॉस्पिटल बना दो, ऑक्सीजन दे दो। हम वही हैं, हम बलात्कारी नहीं हैं, हम तो लोगों की जान बचाने वाले लोग हैं। एक घटिया बयान अरविंद केजरीवाल जी को वापस लेना चाहिए। All right, I'm going to quickly cut across to India Today's Harmeet, who is tracking this development very closely. Harmeet, we see Afghan Sikhs, some of them who have taken objection to what Arvind Kejriwal has said. But more importantly, I'd like to ask you, what's the situation of Afghanistan Sikhs at this point in India and elsewhere? Well, Nabila, there were 100,000 Sikhs and Hindus living in Afghanistan in the late 1970s. And by 1990s... All right, I'd really request you to stay with us for just a minute. I'm going to cut across to RP Singh of the BJP joining us on the phone line. Mr. Singh, here's Kejriwal's response that if you allow citizens to come in, people from other countries to come into India, it's going to lead to huge surge in crime, cases of rape, dacoity, riot. And of course, they will eat away all our natural resources that currently exist for our own people.
Well, there are just 30,000 Sikhs and Hindus which are here, which will probably get the benefit of this new act, and they have been here since long, and they have been here more than a decade now. So, how have they affected any community other? And then the way they were being persecuted in Afghanistan and Pakistan, the total population of Sikhs was 120 lakh at the time of partition. Today, it is less than 6,000 people left there in Pakistan. So, they are the ones who are prosecuted. I mean, and Mr. Kejriwal is trying to create a fear among the other communities or among the Indians. Okay, but Mr. R.P. Singh, you said there are 30,000 Afghan Sikhs who are currently here in India, and they've been here for a decade already. Not only Afghan Sikhs. I mean, people who came before 2014 here, December 2014. I'm talking about those people. So they have been part of our society, already part of our society. Only thing is that they couldn't get the citizenship. Now they'll get the citizenship. Okay. R.P. Singh, thanks very much for joining us on that. I'm going to cut across to Harmeet, who's still with us. Harmeet, go on. You were speaking about the status of Afghan Sikhs in India and elsewhere. Kejriwal saying that, I mean, of course, his comment has been about allowing people from outside to come into India, not particularly speaking of the Sikhs, but the Sikhs largely are also benefiting from the CAA. Yes, of course, Afghan Sikhs are the beneficiaries of this new law. To tell you the facts, in the late 1970s, there were 100,000 Afghan Sikhs and Hindus in Afghanistan, and there are more than 60 gurdwaras in Afghanistan, and at least 10 of them are historical gurdwaras there. So the Indian government has been generous enough. They brought, as the situation escalated in the past few years, so we saw the Indian government operating special flights, and they even brought in the Sarups of Sri Guru Granth Sahib back to India with full dignity and honor. So that was something that really was appreciable. As far as the status of Afghan Sikhs in India is concerned, in the 90s, many of them migrated. That was the first mass migration that took place towards India in the 90s. And yes, now there are around a dozen of Sikhs, maybe more than a dozen or less than 20 Sikhs. They now go to Afghanistan in Kate Parwan Gurdwara Sahib to do the religious customs, to perform the religious duties there. They move in and out. So this is the situation. This indeed is a persecuted community, the Hindus and Sikhs of Afghanistan. Most of them have migrated to the United Kingdom, and United Kingdom is, I think they are the, that's the country where most of them eventually went to, in Delhi, in West Delhi. In fact, I was at a Afghan Gurdwara in West Delhi, Guru Arjan Sahib Gurdwara in West Delhi a couple of weeks ago. It's a beautiful Gurdwara and operated by Afghan Sikh management. You know, in fact, so they are business people. Some of the people who are, Piyush, our correspondent, is with some of those Afghans. I suppose, Piyush, are they with you? Would you bring us some voices on how would they look at the CAA law being implemented? How are they going to benefit? Any word on what they have to say about Kejriwal's comments? Well, absolutely, Nabila. Right now, I am at the office of BJP leader Manjan Singh Sirsa, and here a couple of minutes back, few Afghan Sikhs had come to, extend their wishes and also thanks to the BJP leader for the implementation of Citizenship Amendment Act. You can clearly see as to how they are the Afghan Sikhs who have come to India, and they are very much thankful to the Modi government after the implementation of Citizenship Amendment Act. Let me try to get in a first word from them and understand how are they feeling on not only the politics which is taking place, but also the implementation of Citizenship Amendment Act. How is it going to help them? So मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कहाँ से आप पहले आप यहाँ हिंदुस्तान अफगानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहाँ से आए? हम सर पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान से हैं? जी सर। अब कितना फायदा आपको मिलने वाला है सीए के इम्प्लीमेंटेशन के बाद? इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे हम अपना
जो हमारे पास सिटीजनशिप नहीं होती, अपना बिजनेस नहीं कर सकते। प्लस दूसरा, हमारे बच्चों के पास आइडेंटिटी नहीं है, कोई अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन नहीं मिलती। प्लस तीसरा, इन पे हम अपना बिजनेस या मतलब बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, अपना गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमारे पास पैन कार्ड नहीं, पैन नंबर नहीं होगा तो हम कैसे देंगे। इससे बहुत फ़ायदे होंगे। प्लस दूसरा, जो यहाँ पे स्टे वीज़ा हम लेते हैं उससे थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसमें बहुत राहत हमें मिलेगी। हम बिल्कुल खुल के जिएंगे, हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन में वो करेंगे, मतलब एजुकेशन लेंगे यहाँ पे। और प्लस दूसरा, जो हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इन चीज़ों में CAA का कानून जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। आप कह रहे हैं कि आपको काफी फायदा होगा, आपको सिटीजनशिप मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे, बैंक अकाउंट्स खुल पाएंगे, लेकिन दिल्ली के एक मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग आएंगे यहाँ पर बस जाएंगे, उसके बाद डकैती, चोरी, बलात्कार, इस तरह की चीजें जो है वो बढ़ जाएंगी। इस तरह के बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह में होते हैं। जो अच्छाई फैलाते हैं वो भी हैं, जो बुराई फैलाते हैं वो भी हैं। उसके लिए देखो, हर बंदे को अपना नेचर चेंज करना चाहिए कि हम किस हिसाब से कहाँ मुझे रहना चाहिए। बाकी कोई भी गवर्नमेंट को, कोई भी पार्टी को इसकी वो मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए CAA का, क्योंकि ये एक अच्छा कानून है। अच्छा कानून इसलिए गवर्नमेंट इससे आगे और बढ़ेगी, क्योंकि हम बिजनेस करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, तो टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट का फायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक अच्छी चीज लागू करवाई है, कोई भी पार्टी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। आप कैसे महसूस करते हैं जब इस तरह के बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजियां आती हैं? आप सिख हैं, आप वो समुदाय से आए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बल्कि और भी जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज है वहां से आप आए हिंदुस्तान, इस तरह के बयान जब सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, हमारे बुजुर्ग सारे वहीं से आए थे। जब ये ऐसा बयान देते हैं, आप देखिए जब ये राजनीति में आया तो किस तरीके से आया सबको पता है। और उस समय सबसे ज्यादा मदद इसने जो ली, पैसे के रूप में, दूसरे रूप में, वो सिखों से ली, NRIयों से ली, और उस बेस पे उसने पार्टी खड़ी करी। और आज उनका विरोध कर रहा है। उनको कह रहा है जो गुरु नानक का सिख पगड़ीधारी है, मेरे को एक बता दो कि किसी डकैती में, किसी बलात्कारी में, किसी उसमें इन्वॉल्व हुआ हो, जिसकी प्रवृत्ति, हाँ किसी ने अगर वो चेंज किया तो वो एक अलग बात है, किसकी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते। लेकिन सिखों के लिए, उन सिखों के लिए जो गुरु नानक का सन 1469 में गुरु नानक साहब ने यह धर्म स्टार्ट किया, 556वां अब नानकशाही सम्मत कल उसकी आरंभता है, शुरुआत हो रही है, उसमें ये बात ऐसी करके एक घटिया मानसिकता को दर्शाते हैं कि जो लोगों की जान बचाते हैं, जो अपने घर में राशन हो ना हो औरों को लंगर खिलाते हैं, और जिसमें हमेशा पूरे वर्ल्ड में सिख कहीं भी रह रहा हो, उसने हमेशा सबके लिए भला मांगना है। आखिर में अरदास में एक ही बात कहता कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जो सरबत का भला मांगता वो कभी बलात्कार करेगा, वो कभी डाकू को होगा, वो कभी दंगा करेगा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर है जितने believe that they rightfully deserve citizenship as they were persecuted in Taliban. We heard an extensive testimony there that a Sikh refugee has spoken with to India today.